Friends are back with another session here of ward round. Today we will take our case 4 which is of post-operative paralytic ileus. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप ward round को हैंडल करते हैं उस वक्त आपके माइंड में एक चेकलिस्ट होना चाहिए कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या रेजिडेंट ने आपको बताया, तो एग्जामिनर उसमें क्या गैप निकाल के क्वेश्चंस आपको दोबारा पूछ सकता है. वो चेकलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के एंड में शो करूँगी. वो चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू फ्रेम क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्टिंग विद द केस. Resident present the case. So this is a case of P3L3, a 34-year-old patient, post-op day 2 following an elective LSCS. Then at 39 weeks of gestation for previous 2 LSCS. इसका मतलब ये इसका थर्ड LSCS है. She had no antenatal complications and the surgery was uneventful. Intraoperatively minimal blood loss था. Uterus was well contracted. On post-op day 1, she was mobilized, started on the oral liquid diet and given the prophylactic antibiotics. So first post-op day was uneventful. Then today, that is post-op day 2, she complains of severe abdominal pain, distension and no passage of flatus since surgery. She also reports nausea and 2 episodes of non-bilious vomiting. On examination, her pulse was 108 per minute, BP was 100 by 70 mmHg, temperature 99.2, respiratory rate is 20 per minute. On general examination, there was only mild pallor, no icterus, no pedal edema. On abdominal examination, abdomen was distended, tender, tense, bowel sounds absent, and surgical scar was clean and dry, no discharge. Per speculum examination, minimal lochia and no foul smell. Per vaginal examination, uterus is just above the symphysis pubis and non-tender and well contracted. On investigations, what we have seen it was कि HB was 9.8 gram per dl, WBC count 13,500, serum electrolytes within normal range. Like sodium जो होता है वो 135 से 145 normal range है, and potassium जो है वो 3.5 से 5.1 normal range में होता है. तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रेंज में है. जब हमने एक्सरे किया तो इट इज़ शोइंग डायलेटेड बाउल लूप्स विथ मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल. अब डायलेटेड बाउल लूप से दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, आइदर इट इज़ अ पैरालाइटिक इलियस या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है. जनरली हम लोग एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट पोजीशन में, दैट इज स्ट्रेट पोजीशन में लेते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हम लोगों को क्लियरली विजिबल हो. तो डायलेटेड बाउल लूप्स दो तरीके के हो गए. आइदर वो पूरा कंसिस्टेंट है, पूरे के पूरे बाउल्स एक जैसा डायलेटेड हो रखे हैं, या फिर कहीं पे वो थिन है और फिर पीछे की तरफ वो, दैट मीन्स प्रॉक्सिमली डायलेटेड है एंड डिस्टली जो है वो कंस्ट्रिक्टेड की तरफ है, शोइंग कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. तो इस तरीके की दो चीज़ें हमें मिल सकती है. लेट्स सी. नाउ यू एज अ स्टूडेंट स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू द रेजिडेंट. यू हैव टू आस्क लाइक, वॉज देयर एनी इंट्राऑपरेटिव इंजरी टू द बाउल और ब्लैडर नोटेड? When was the patient's last bowel movement and passage of the flatus? Was there any difficulty in closing the peritoneum? Any adhesions noted intraoperatively? How has the patient been able to tolerate oral intake? Is there any history of previous episodes of similar pain or abdominal surgeries? So history of abdominal surgeries is there. Like she was previous 2 LSCS case already, so पहले 2 LSCS हो रखे हैं, तो chances of adhesions हैं उस patient के अंदर. What was the fluid balance post operatively? Any sign of dehydration? Very important to ask. Are there any sign of peritonitis? Very important to ask. Guarding rigidity and rebound tenderness. Has the patient passed urine? Was any bladder distension noted? So now the examiner step in and start asking you a question. So first he will ask like, what is your provisional diagnosis and why? So your provisional diagnosis will be post-operative ileus because of the abdominal distension, absence of bowel sounds and no passage of flatus. और पेशेंट का पोस्ट ऑप डे 2 ही है, तो क्लासिकल साइन ऑफ इलियस है ये. रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरीज विच कैन लीड टू ट्रांजिएंट bowel dysfunction. Nausea and vomiting are the common feature in the ileus, and X-ray showing dilated bowel loops with air fluid level supports this diagnosis.
तो डिफरेंस क्या होना चाहिए पोस्ट ऑप इलियस और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में? पोस्ट ऑप इलियस यूजुअली हमको अर्ली डेज ऑफ पोस्ट ऑप पीरियड्स में मिलती है, लाइक 1 to 3 days में. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वक्त मिल सकती है पोस्ट सर्जरी, पर ऑफन ये 3 to 7 days के वक्त में मिलेगी. पेन की बात करेंगे तो इलियस के अंदर डिफ्यूज डल और कंटिन्यूस पेन होगा. ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कॉलिकी पेन होगा, सीवियर इंटरमिटेंट टाइप ऑफ पेन. एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो इलियस के अंदर मॉडरेट होगा बट प्रोनाउंस्ड इन दी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. बाउल साउंड्स विल बी एक्टिव और हाइपो एक्टिव. हियर इट विल बी हाइपर एक्टिव, टिंकलिंग अर्ली और एब्सेंट लेट. वॉमिटिंग प्रेजेंट, नॉन बिलियस टाइप ऑफ वॉमिटिंग, जो हमारे केस में नॉन बिलियस दिख रहा है. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बिलियस वॉमिटिंग और फेक्यूलेंट. एक्सरे फाइंडिंग इज इम्पॉर्टेंट. डायलेटेड बाउल लूप्स, एयर फ्लूइड लेवल विथ नो ट्रांजिशनल जोन, बिकॉज पूरा बाउल एक जैसा डायलेटेड है. इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायलेटेड प्रॉक्सिमल लूप्स एंड कोलैप्स डिस्टल बाउल्स, क्लियर transition zone can be like seen in the x-ray. You can observe that. So like next question will be, what's your plan for managing this patient? So first of all, as we are like have the provisional diagnosis of paralytic ileus, so conservative management we have to do, like NPO, nil plus oral until the bowel function returns, followed by the IV fluids for hydration and electrolyte balance and monitoring potassium along with that. अब पोटेशियम ही क्यों मॉनिटर करना है, और भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. लाइक सर्जरी ऑफन कॉज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट्स, okay, due to stress, blood loss and fluid administration. So hypokalemia, low potassium is there, usually seen in the surgery, after surgery, post surgery, is common due to fluid overload, use of diuretics or vomiting. Hypokalemia impairs the smooth muscle contraction and slowing gut motility and leading to abdominal distension, pain and vomiting. Electrolyte imbalances delay recovery and increase the risk of infection and dehiscence. So that is why we are like, it is important to monitor potassium. उसके बाद में नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन फॉर decompression if vomiting persist. Analgesics, avoid opioids as they worsen the ileus. Encourage the early mobilization to stimulate the bowel motility. This is very important. Then what we have to monitor is daily abdominal girth measurement to check the distension, and serial x-ray if distension worsen. Monitor urine output and sign of dehydration. अब एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट डेली करना है, बट पर डे भी हमको एवरी 4 hours वी हैव टू लाइक मॉनिटर गर्थ मेजरमेंट एवरी 4 hours. Okay, then when would you suspect intestinal obstruction and plan surgical intervention? If there is like no improvement after 72 hours of conservative management, तब suspect करेंगे. और either there is sign of peritonitis with a severe abdominal pain which is guarding rigidity and rebound tenderness, worsening distension with absent bowel sounds. Suppose कि पहले abdominal girth 104 centimeter था and like it increased up to 118 centimeter. So this is the worsening of the distension. Persistent vomiting with dehydration and electrolyte imbalance, radiological evidence of mechanical obstruction, transition zone, complete air fluid levels. Now examiner will ask what complication can arise if the condition is not managed promptly. So aspiration pneumonia due to persistent vomiting, electrolyte imbalance, dehydration, abdominal compartment syndrome from severe distension, bowel ischemia and perforation in prolonged obstruction, sepsis and multi-organ dysfunction in the advanced cases. Now what measures can be taken to prevent the post-operative ileus? First of all, minimize the bowel handling during surgery. Second, adequate fluid balance and electrolyte correction post-operatively is important. Early ambulation, mobilization post-surgery, avoidance of opioid analgesics, use of anisette or regional analgesia when possible. Early oral feeding when tolerated. Then this is a comprehensive checklist for post-operative ward rounds. कोई भी post-op ward rounds आए, you have to like keep this in mind कि आपको क्या क्या पॉइंट्स पूछते हैं. टोटल 6 पॉइंट्स है. फर्स्ट इज पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, सर्जरी डिटेल्स लाइक पेशेंट का नेम, एज, GPEL स्टेटस, मेक श्योर इट्स अपडेटेड एंड पोस्ट डिलीवरी. पोस्ट ऑप डे कौन सा है सर्जरी का, टाइप ऑफ सर्जरी, LSCS है, TAH, myomectomy, laparoscopy, what is that, an indication of surgery, why was the surgery needed,
कोई फीटल डिस्ट्रेस हुआ, प्रीविया था या AUB था, इंट्राऑपरेटिव कोर्स में एनी कॉम्प्लिकेशन, PPH, ब्लैडर बाउल इंजरी, estimated blood loss, need for blood transfusion, use of drains, catheters, any special devices, all you have to like keep in mind these points. जनरल कंडीशन, वाइटल्स, टेम्परेचर, हार्ट रेट, BP, रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन सब क्या था, कितना था, ये पता होना चाहिए. पेन मैनेजमेंट, पेन स्कोरिंग आउट ऑफ 10, टाइप ऑफ एनाल्जीसिया, एनासिड्स, ओपियोइड्स, इज पेन कंट्रोल, ambulation and activities, the patient mobilizing, importance to prevent DVT, need for support, walker or any assistance needed. For sleep, if the patient is sleeping well or any anxiety or distress is there. For input and output, you have to ask oral intake, tolerating oral feeds or not, nausea, vomiting, bowel function, past flatus or stool, very important for ileus evaluation. Any abdominal distension is there. For urine output, catheter in place or removed. If it is there, so how much urine output, any burning or dysuria present. Drain output if present, amount and the nature of fluid, which is serous, blood stain and purulent. Surgical site and wound care, dressing, clean, dry, intact, wound condition, redness, any swelling, discharge, gapping, dehiscence, tenderness around the site. Lochia for obstetric cases, color of that lochia, mount and any foul smell. Investigations, you have to keep in mind hemoglobin spatially stable or falling, TLC rising suggest infection, platelet count important if the patient had PPH or coagulations issues, electrolyte post-operatively shifts like sodium and potassium, renal function test if indicated, especially in complicated surgeries. Medications and prophylaxis antibiotics type and duration, analgesics, NSAIDs, opioids are the effective anticoagulant if high-risk DVT prophylaxis given, PPIs, gastric protection if on NSAID, uterotonics if obstetric case ongoing need, red flags like sign of infection, fever, tachycardia, wound discharge. So it will be like suggesting toward the infection. If there is a falling HB, pallor and hypotension, suggest any sign or like any hemorrhage. Ileus, abdominal distension, no flatus or stool, multiple air fluid level, thrombosis, calf tenderness and swelling, respiratory issues, any breathlessness, low SpO2, post-atelectasis. Discharge planning, when is the patient likely to be discharged? If is she fit for discharge, ambulating, eating well, no fever, discharge medication, antibiotics, analgesics, hematinics, and follow up like OPD, visit date, wound care instruction, all you have to keep in mind. सब कुछ आपको एकदम सीरीज वाइज आपको ये अगर माइंड में रहेगा तो आपको कभी ट्रबल नहीं होगा क्वेश्चन पूछने के लिए. So thank you for watching this session. Stay tuned for next session. Thank you.